Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So we are focusing on SBI PO exam. Now, many of you have dream of becoming SBI PO. How we can convert this dream into reality? For this channel has lot of videos, and we have started a series how to convert your dream into reality. In these videos, I have discussed how you should focus on study, what should be your overall plan of study, how you can improve in English, how you can improve in quant, how you can improve in banking financial knowledge, how you can improve in descriptive paper. Hundreds of our channel subscribers are selected SBI PO every year, and since 2012 I am helping you, and YouTube channel I started in 2017. So we have hundreds of our channel subscribers. Those are working as SBI PO, and some of them has already moved to scale to 3 also. So in this video today we will discuss the development of reasoning capabilities so that we can score very high in reasoning paper. Reasoning cannot be crammed. Reasoning is different than normal subject. Reasoning can be developed. How we can develop the reasoning, that technique I will discuss with you. Simply follow that technique, you will see lot of change. Now for this you require two basic tools. One is topic test, another is sectional mock test. Link of this topic test and sectional mock test is available in description and comment column. Click the link, register, take topic test along with sectional mock test and apply coupon code AA03 to have 10% off. You can buy these two through SmartKida app also. Download the app, select these two plans and apply coupon code AA03 to have 10% off. Now, the moment you have topic test, now usually what we do is we attempt a test and then we are not getting good marks, we get discouraged. The reason is our level of reasoning is not that we can attempt these questions. So first thing is to learn and develop reasoning. For this, say you take one topic test, coding decoding. Now here, the moment you go to the topic test, there may be in one topic test, there may be 10 questions. Now, you need not attempt these topic tests because we are using this topic test as a learning tool. So what you can do is you can simply submit this without attempting, or you can attempt one or two questions and submit. Why we are doing this? So that we have access to the solution. To develop reasoning, it is very important that I should read the question and then I should read the solution. And then I should apply my brain how we can arrive at this solution, the pondering in the mind, the thought process in the mind. So if we start provoking thoughts in our mind, how I can reach this answer, that will gradually develop reasoning in you. So the technique is open a topic test. Either you need not spend time there. Simply submit without attempting any question. So the moment you submit, you will have access to the solution. Now read the solution, read the question, and after understanding this, you should reattempt this topic test. And when you will reattempt the topic test, when you are knowing the answer, still you will find that out of 10, all are not correct because you have not retained, you have not developed the reasoning as yet. So wherever your answer is wrong, again see the solution, again attempt that topic test. Same methodology you can use for sectional mock test. You will feel the difference that gradually you are able to improve your performance, because we are using this topic test not as a test but as a learning tool. So the way is, don't spend time in attempting the topic test, simply submit. You will have access to the solution, see the solution, look at the solution, look at the question, start your thinking process, how this answer is achieved,
and then attempt the topic test, you will find that once your brain is having preconceived ideas, your performance in reasoning will start improving, and ultimately your brain will become conditioned to such type of questions and answers. Try this. This is a methodology. This is a very good method. Tried on various people and were highly successful. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। SBI PO बनना काफ़ी लोगों का ड्रीम है, उसको वो कैसे अचीव करें, इससे संबंधित एक सीरीज़ हम चला रहे हैं जिसमें आपको तरह तरह की टेक्निक्स बता रहे हैं कि SBI PO की आप कैसे तैयारी करें कि आप कामयाब हो सकें। उसके लिए ओवरऑल तैयारी कैसे करनी है, इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, DI कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं, ये सब वीडियोस हमने ऑलरेडी दे दी हैं आपको और एक प्लेलिस्ट में दे दी हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए। हर साल सैकड़ों कैंडिडेट हमारे जो हैं वो SBI PO बनते हैं, और 2012 से फेसबुक पे और 2017 से मैं यूट्यूब चैनल पे आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, और सैकड़ों की तादाद में हमारे चैनल सब्सक्राइबर आज स्टेट बैंक में PO हैं, उनमें से कई स्केल 2 स्केल 3 भी बन चुके हैं, प्रमोशन होती रहती है। तो अगर आपका ड्रीम है SBI PO बनना तो इन टेक्निक्स को आप यूज़ करिए। रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको हम क्रैम नहीं कर सकते। रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको लर्न करने के लिए मुझे डिफरेंट टेक्निक चाहिए। डिफरेंट टेक्निक ये है कि अगर मेरे पास क्वेश्चन हो और उसका सलूशन भी मेरे पास हो, और फिर मैं दिमाग लगाऊं कि ये सलूशन कैसे आया है, अपने दिमाग पे एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट करूं, उसको मैं दिमाग को एजिटेट करूं कि भाई ये आंसर क्यों आया, कैसे आया, ये सोचना मैं शुरू करूं, चाहे अधिक टाइम लगाऊं एक ही क्वेश्चन पे, तो धीरे धीरे मेरे माइंड की कंडीशनिंग हो जाएगी और मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊंगा। उसके लिए एक टेक्निक मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आप अटेम्प्ट करिए। इसके लिए 2 चीज़ें आप ले लीजिए, टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट। स्मार्ट कीड़ा के दोनों आप ये ले लीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इस लिंक को क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, टॉपिक टेस्ट ले लीजिए, सेक्शनल मॉक टेस्ट ले लीजिए, और कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। स्मार्ट कीड़ा ऐप से भी आप ले सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और दोनों चीज़ों को सिलेक्ट कर लेंगे और कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। अब हमारे पास टॉपिक टेस्ट आ गया। मान लो मैं कोडिंग डिकोडिंग करना चाहता हूँ, तो मैं टॉपिक टेस्ट कोडिंग डिकोडिंग कर लूँगा। अब यहाँ पर मैं अभी इसको सॉल्व नहीं करूँगा टेस्ट को, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है, क्योंकि मुझे सोल्यूशन देखना है, तो डायरेक्ट तो सोल्यूशन देखने को मिल नहीं सकता मुझे, तो मैं क्या करूँगा, या तो रैंडम एक आध क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर दूंगा इसका, या मैं सीधा सबमिट कर दूंगा इस टेस्ट को बिना अटैम्प्ट किए। तो जब मैं सबमिट कर दूंगा तो अब मेरे को एक्सेस हो जाएगी सोल्यूशन की, अब मैं सोल्यूशन देख सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, सोल्यूशन देखूंगा और समझूंगा कि ये सोल्यूशन कैसे आया, और फिर री अटैम्प्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड री अटैम्प्ट अवेलेबल है, तो आप री अटैम्प्ट ऑप्शन से फिर इस टॉपिक टेस्ट को करेंगे। और हो सकता है जबकि हमें 10 के 10 आंसर पता थे, तब भी हमारे आंसर 10 के 10 ठीक ना आए, 6 आए या 4 आए या 5 आए। जो आंसर गलत आए हैं उसका सोल्यूशन फिर देखें और फिर उसको अटैम्प्ट करें। इस टेक्निक को आप अपनाएंगे, आप देखेंगे ग्रेजुअली आपकी रीजनिंग डेवलप होनी शुरू हो गई। रीजनिंग को डेवलप करिए। तो रीजनिंग डेवलप करने का तरीका यही है कि मेरे पास क्वेश्चन हो, फिर मेरा उसका आंसर हो, और फिर मैं दिमाग लगाऊं ये आंसर कैसे आया, और धीरे धीरे वो कंडीशनिंग मेरे माइंड की होती जाएगी और मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाऊंगा। तो ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये आता है कि सर बिना अटैम्प्ट किए कैसे हम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया सबमिट ऑप्शन से, वो अगर आप नहीं भी अटैम्प्ट करते हैं, खाली सबमिट कर देते हैं, तब भी आप सोल्यूशन देख सकते हैं। और सोल्यूशन देख के अगर हम माइंड को प्री नोशन दे देते हैं, तो रीजनिंग का तरीका यही होता है कि माइंड के अंदर वो चीज़ पहले से होनी चाहिए। तो पहले हम उसको प्लांट कर रहे हैं उसके आंसर को, फिर हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो मेरा दिमाग चलने लगेगा कि ऐसे आंसर कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो इसको ट्राई करिए। ये टेक्निक जब मैंने
मतलब ये कंसेप्ट को समझा था रीजनिंग के, तो मैंने इस टेक्निक को बहुत ही यूज़फुल पाया था। गॉड ब्लेस यू ऑल।